Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Uh, the four components of an API reference. API में जो रेफरेंस होता है उसमें अगर देखा जाए तो फोर उसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे एक आथर है, आथर के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी कि एक आथर हो तो कैसे लिखना है, दो हो, तीन हो तो उसका क्या फॉर्मेट होता है एपीआई में। इस तरह जो ईयर आ रहा होता है तो डेट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। व्हेन वाज द वर्क पब्लिश्ड, तो हमें ये देखना है कि अगर रिसर्च आर्टिकल है तो उसमें पब्लिश्ड डेट लगानी होती है या एक्सेप्टेड पेपर एक्सेप्ट हुआ होता है एक डेट पर। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर बुक है, बुक को रेफरेंस में ले रहे हैं तो बुक में देखा जाता है कि पब्लिकेशन जो जो उसका बुक का कौन क्या लिखा जाएगा, यानी कौन सा साल लिखा जाएगा इसका। टाइटल में भी टाइटल है एक इसका कंपोनेंट और दूसरा सोर्स है। टाइटल व्हाट इज वर्क कार्ड एंड सोर्स मींस वेयर कैन द वर्क बी रिट्रीव्ड, कहाँ से ये लिया जा सकता है। अब आथर में भी यहाँ ज़रा समझ लें, जैसे डॉक्टर फयाज लिखा हुआ है तो इसमें जब हम सोर्स में जब साइट कर रहे होते हैं एपीए में तो उस वक्त डॉक्टर वगैरह या मिस्टर ये नहीं लगाया जाता। तो इसमें आप ये लास्ट नेम है इसका अहमद, और इसके अंदर जो फयाज है वो इनिशियल, ये इनिशियल एफ डॉट। और अगर फर्ज करें इसकी पब्लिकेशन 2022 में है, 2022 में, तो उसका ईयर इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए बुक में रेफरेंस एंट्री किस तरह से होती है। ऑथर्स लास्ट नेम, देन कोमा, इनिशियल्स, अगर एक इनिशियल तो या एक से ज़्यादा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द बुक, टाइटल ऑफ द बुक इटैलिक में है, एडिशन ईडी यानी फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, ईडी स्मॉल ईडी डॉट है, स्मॉल ई है, और फिर पब्लिशर। ये रेफरेंस एंट्री है। इसी तरह से जो इन टेक्स्ट साइटेशन पैरेंथेसिस में इस तरह से आएगा, ऑथर्स लास्ट नेम, देन कोमा और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। नरेटिव में ऑथर्स लास्ट नेम, देन स्पेस एंड विद इन द पैरेंथेसिस ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब इसके एग्जांपल देखें ऐसे, रेफरेंस एंट्री लाइक स्मिथ, कोमा, इनिशियल टी डॉट, स्पेस, ईयर लाइक 2020। अब ये टाइटल है, आगे फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है। एपीए स्टाइल में जब अपने बुक का सोर्स लिखना है तो रेफरेंस में ऐसे लिखा जाता है, फुल स्टॉप देन बुक नेम, टाइटल बुक का। द साइटेशन मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स, अ क्विक गाइड, ये इटैलिक में है सारा। एडिशन में आप जैसे ये सेकंड एडिशन, और फिर फुल स्टॉप है, फिर पब्लिशर, देन अगेन फुल स्टॉप। इन टेक्स्ट साइटेशन पैरेंथेसिस में इस तरह से लास्ट नेम, कोमा, देन ईयर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। और नरेटिव में लास्ट नेम, देन स्पेस और पैरेंथेसिस। Author, the author is responsible for creating the work. This can be individual, multiple people or organization. सिंगल ऑथर हो सकता है, ज़्यादा लोग हो सकते हैं ऑथर्स, और या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सच एज कंपनी, गवर्नमेंट एजेंसी और वर्क ग्रुप, और अ combination of them. The, the author can be writer of a text, but also the
होस्ट ऑफ पॉडकास्ट और डायरेक्टर ऑफ मूवी। टेक्स्ट में तो हम आथर कहते हैं। इसी तरह अगर कोई पॉडकास्ट है तो उसमें होस्ट होता है। टीवी ड्रामा है लाइक उसमें होस्ट होगा, क्रिएटिंग वर्क यानी होस्ट है वो। इस तरह मूवी में वो डायरेक्टर लिया जाता है, आथर के तौर पर डायरेक्टर होगा। बेसिक फॉर्मेट एपीए में रेफरेंस का ये होता है कि लास्ट नेम कोमा देन इनिशियल्स, और हर इनिशियल हर लेटर के साथ फुल स्टॉप है। तो ये लास्ट नेम इनिशियल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सेपरेटेड बाय पीरियड एंड स्पेस। लाइक यहाँ देखिए डॉक्टर शाहिद कमाल है, जैसे फर्ज करें आथर है, तो ये इनिशियल है उनका, ये सॉरी ये लास्ट नेम है और ये इनिशियल है। इस तरह से लिखा जाएगा कमाल कोमा देन स्पेस इनिशियल, इनिशियल में फर्स्ट नेम और ये फुल स्टॉप ऐसे। अब देखें यहाँ डॉक्टर नहीं लिखा जाता, ठीक है, रेफरेंस में डॉक्टर वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। इस तरह से डॉक्टर फयाज अहमद है, फर्ज करें अहमद कोमा स्पेस देन इनिशियल। मल्टीपल आथर्स को इस तरह से लिखा जाएगा सेपरेट द नेम्स ऑफ मल्टीपल आथर्स बाई विद कोमा, कोमा के साथ आपने सेपरेट करना है आथर्स को। यहाँ देखें ये कोमा है, ये वाला फर्स्ट कोमा है जो था वो लास्ट नेम देन स्पेस और इनिशियल, और देन आपने इसको कोमा के साथ सेपरेट कर लिया। सेकंड आथर, सेकंड आथर के लिए यहाँ एम्परसेंड साइन यूज़ किया जाता है, एंड के लिए एम्परसेंड साइन यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ देखिए सेपरेट द नेम्स ऑफ मल्टीपल आथर्स विद कोमा बिफोर द लास्ट आथर्स नेम, you should also insert an ampersand this one। लास्ट में एक तो कोमा भी होगा और फिर स्पेस है, देन एम्परसेंड साइन। रेफरेंस एंट्री में कंटेन अप टू 20 ऑथर्स, एक रेफरेंस में 20 ऑथर्स तक लिखे जा सकते हैं। इफ देयर आर मोर देन 20 लिस्ट द फर्स्ट 19 ऑथर्स फॉलोड बाय एन एलिप्सिस एंड द लास्ट ऑथर्स नेम। अगर 20 से ज़्यादा हैं तो पहले 19 ऑथर्स लिखे जाएंगे और फिर एलिप्सिस होगा और फिर लास्ट नेम होगा। यहाँ देखें, यहाँ आपके पास 3 ऑथर्स हैं, इन फर्स्ट ऑथर देन कोमा स्पेस देन सेकंड ऑथर और लास्ट में एम्परसेंड साइन यूज़ करते हुए लास्ट ऑथर लिखा जा रहा है, ठीक है। ये 3 ऑथर्स हैं। अगर 3 से ज़्यादा हैं, यहाँ 20 से भी ज़्यादा है, 19 तक यहाँ तक आ गए, ये 19 ऑथर्स हैं। और लास्ट ऑथर एलिप्सिस के बाद लास्ट ऑथर लिखा जाता है और यहाँ एम्परसेंड साइन नहीं है, ठीक है। अगर गौर करें तो ये 1 2 ये 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। 19 के बाद यहाँ एलिप्सिस, 3 डॉट्स और फिर लास्ट नेम। ऑथर्स रोल इन एपी रेफरेंसेस, बुक में इसका रोल एज ऑथर होता है या एडिटर, और ऑथर्स के लिए इस तरह से होगा कि लास्ट नेम और कॉमा स्पेस इनिशियल्स, इनिशियल एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। और अगर बुक एडिटर है, एडिटर के लिए कैपिटल ई डी, अगर स्मॉल लिखते हैं तो एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो एडिटर कैपिटल ई डी यहाँ पीरियड।
फिल्म के लिए डायरेक्टर होता है और उसी तरह से आप उसका लास्ट नेम इनिशियल्स विद इन पैरेंथेसिस डायरेक्टर लिखा जाता है। टीवी सीरीज एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर, सो एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर इस तरह उसके नेम के साथ लिखा जाएगा। होस्ट के लिए होस्ट इस तरह टाइप कर देंगे और इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसी तरह से जो अगर कोई फोटोग्राफ है तो उसका फोटोग्राफर, आर्टिस्ट आर्ट वर्क के लिए। एब्रीवेट द एडिटर रोल टू ईडी, एडिटर यानी वन एडिटर। मल्टीपल एडिटर्स एस का इजाफा कर देंगे, ईडी एस डॉट, एक से ज़्यादा एडिटर्स होंगे। डेट में the date component appears after the author component. Use the following guidelines to determine the publication date. For book, always take the copyright date. बुक के लिए कॉपीराइट डेट यूज की जाती है, बुक के लिए कॉपीराइट। For journal articles, take the year in which the volume was published. जर्नल्स में पब्लिश्ड आर्टिकल, पब्लिश्ड डेट होगी। सबमिटेड, एक्सेप्टेड और पब्लिश्ड, यहाँ यानी पब्लिश्ड डेट यहाँ जर्नल्स में ली जाएगी। फॉर वेब पेजेस यू मे यूज द लास्ट अपडेटेड, लास्ट अपडेटेड फॉर द वेब पेजेस। Date if it applies to the content you are citing. Don't take the copyright date for the footer of a website. Basic format ईयर इस तरह से लिखा जाएगा, अगर साथ मंथ शो करना है तो कोमा स्पेस देन मंथ विद फुल स्पेलिंग, ईयर कोमा, अगर मंथ में डेट भी साथ मेंशन करनी है तो इस तरह से। और अगर आपके पास सीरीज़ है, रेंज है ईयर्स की, तो जैसे 1997 डैश 1999। अब यहाँ भी इस तरह से नहीं होगा कि हम लिखें 1997 टू डैश 99, नो, बल्कि 1999 पूरा लिखेंगे। सेम ऑथर सेम डेट हो, अगर अगर इस तरह से हो जाए कि सेम ऑथर है, फर्ज करें किसी आर्टिकल का डिफरेंट दो आर्टिकल्स हैं, उन दोनों को साइट करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं दोनों को इस तरह से लिखता हूँ ईयर के साथ, तो वहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है। उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए फिर यहाँ साथ ए लिखा जाएगा और ए उस पेपर को देंगे जिसके टाइटल में अल्फ़ाबेटिकली जो जो सबसे पहले वर्ड आएगा, जैसे अडॉप्शन है, यहाँ टी है, ट्रस्ट डिफरेंसेस, ठीक है, तो इसको बी दे दिया जाएगा। सोर्स, in the source component you include information about where the work can be retrieved. When citing a standalone work, standalone, for example, a book or web page, you include the name of the publisher, एक भी उसके database, platform or website, whichever is relevant to your source, and DOI. DOI stands for Digital Object Identifier or URL. A uniform resource locator, URL stands for a uniform resource locator, is a short string containing an address which refers to an object in the web. वेबसाइट में को अगर आप सोर्स के तौर पर ले रहे हैं तो उसके एड्रेस को, उसके लिए आप URL यूज़ करते हैं या DOI यूज़ करते हैं। When citing a work that is a part of greater whole, for example, an article in a journal,
You include information about this greater whole, like its title, relevant edition, volume or issue number. Issue information, relevant contributors like editors, page range and publisher, as well as DOI or URL of the work. जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उसके लिए आप सोर्स के तौर पर ये लेंगे टाइटल, रेलेवेंट एडिशन, वॉल्यूम, इशू और editors, page range, publishers, and as well as DOI or URL. इन दोनों में से एक लिया जाएगा. अगर अवेलेबल है DOI तो इसको प्रेफर किया जाता है. Title of the greater whole, the inclusion of titles is explained in title. Component section, the title of greater whole, for example, journal, newspaper, or edited book, is usually the first element of the source. Title है ये first element है source में. Components and is italicized. Edition information and volume and issue number. Books can have different editions, while periodical such as journals and magazines usually have volume and issue numbers. This information appears after the title. Put edition information in parentheses. Parentheses edition की information दी जाएगी. But unlike the title, don't italicize it. बुक में फॉर्मेटिंग इस तरह से होती है. ये बुक है. बुक को जब उसका सोर्स आप APA फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये ऑथर्स नेम, ऑथर्स लास्ट नेम, देन इनिशियल, ईयर, फुल स्टॉप आ रहा है. ये टाइटल ऑफ द बुक इटैलिक है. एंड एडिशन like 5th edition space ed dot within parentheses, then full stop, and publisher name like Sage Publications, then full stop. Italicize the volume number and place it after the periodical title. The issue number appears after the volume number in the parentheses, not italicized. Do not add a space between the volume and issue number. वॉल्यूम और इशू नंबर अगर आपको शो करने हैं, ये वॉल्यूम नंबर है, इसको इटैलिक में लिखा हुआ है, ठीक है. और देन इशू नंबर बगैर यहाँ स्पेस के parenthesis, within the parenthesis इशू नंबर, यानी जो वॉल्यूम 17 and issue number is 2. This format is for the journal articles. जर्नल आर्टिकल में उसी तरह से ऑथर्स, देन टाइटल यहाँ तक टाइटल है. टाइटल यहाँ इटैलिक नहीं होता, ठीक है. और जर्नल्स ऑफ, अब यहाँ पर जर्नल्स को इटैलिक में लिया जाता है. जर्नल नेम, जर्नल ऑफ इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग, देन वॉल्यूम एंड इशू नंबर and page range 130A to 149. और यहाँ पे आपका DOI में एंड पर फुल स्टॉप नहीं होता, और यहाँ प्रोटोटाइप साथ होगा HTTP. बाज़ HTTP S वगैरह के होता है और यहाँ S के साथ. Contributors, if there are relevant contributors
other than the author of the work you are citing. You need to credit them as well. The most common examples are editors of collections and translators of books in foreign language. Unlike the author's components, the names of the contributors are not inverted. You introduce contributors with the word in right after the title component. Don't forget to include a role description in parentheses. अगर कंट्रीब्यूटर्स कोई हैं तो फिर उसको लाइक यहाँ एडिटर्स ये देखें यहाँ कंट्रीब्यूटर्स नहीं है तो फिर विद इन द पैरेंथेसिस आप उनको इस तरह से लिखेंगे जैसे एडिटर्स हैं पीटर लैंड पब्लिशिंग ये बुक में था पेज रेंज के लिए पी डबल पी डॉट अगर सिंगल पेज है तो पी डॉट लिखा जाएगा और ये जर्नल आर्टिकल्स का फॉर्मेट है और ये बुक फॉर्मेट में ये पी डॉट ये पेज रेंज के लिए सिंगल पेज होता तो पी डॉट होता जस्ट फॉर बुक्स बुक में जो इटैलिक होता है वो बुक पब्लिशर है बुक में बुक का टाइटल इटैलिक किया जाता है और जबकि आर्टिकल्स के अंदर ये पब्लिशर को इटैलिक में लिखा जाता है और आर्टिकल में वॉल्यूम एंड इशू नंबर साथ है और ये पेज रेंज है और DOI में फुल स्टॉप नहीं है और ये एंड पर होता है Depending on the type of source, you should include the name of publishers, database, platform, or website responsible for distributing the work. When the author of a work is the same as the publisher or website name, you may omit this information. अगर author और publisher same है तो फिर उसको omit कर दिया जाता है otherwise information दे दी जाती है Physical location. Some works are associated with specific location. For example, an artwork in a museum or conference presentation. In these cases, you include city and state country in reference. Physical location भी दी जाती है reference के अंदर अगर वो important हो जैसे यहाँ न्यूयॉर्क यहाँ ऐड कर दिया गया DOI or URL. Works that can be accessed online usually have URL or DOI. DOI is often used for scientific publication and books. DOI scientific publication and books, while URL is more common for other online publication. Use the following guidelines. If available, always add a DOI. A DOI is preferred over URL. Include protocol HTTP colon double slash or HTTPS colon double slash for both DOIs and URLs. Do not add period after the DOI or URL. Abbreviations in APA reference. Revised edition abbreviated as
REV dot space for edition ED dot second edition, like second to second, सेकेंड किस तरह से लिखेगा एडिशन में, और ई डॉट ई डी डॉट एडिटर्स में ई बड़ा करना है, कैपिटल ई से मुराद होगा, ई डी से मुराद एडिटर है, और प्लूरल के लिए ई डी एस। ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर्स ज़्यादा हों तो उसके लिए TRANS डॉट, नरेटर NARR डॉट, narrators NARRS, no date N dot D dot, page if page is single page, P dot, plural range of the pages, PP dot, small p, paragraph के लिए PARA, small letters PARA dot, volume V capital है यहाँ, VOL dot for volume singular and volumes VOLS, issue number NO dot, supplement SUPPL dot, activize, active versus passivize. The passivize, which places the focus on the object of an action rather than on who or what is carrying it out, the agent, is often overused in academic writing. It can be long-winded and it sometimes obscures your meaning if you don't specify the agent. The test was completed. Passivize, agent unclear. इसमें जो सब्जेक्ट है वो अनक्लियर है, टेस्ट वाज कंप्लीटेड, तो इसलिए इसको पैसिव में नहीं लिखा जा रहा, ये रॉन्ग होगा, एकेडमिक राइटिंग में इस तरह से नहीं लिखा जाता। द टेस्ट वाज कंप्लीटेड बाय पार्टिसिपेंट, पैसिवाइज, लॉन्ग वाइंडेड, द पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटेड द टेस्ट, ये देखें इसको एक्टिव में लिखा जाएगा, पार्टिसिपेंट completed the test. APA therefore recommends using activize by default. However, that doesn't mean you can never use passivize. When it's unimportant who carried out the particular action, जब ये बताना जरूरी ना हो कि किसने एक्शन लिया, काम करने वाला एजेंट कौन है, the passivize is better choice. जैसे देखें, James and I mounted the projector on the wall, इसको इस तरह से लिखा जाए तो बेहतर होगा, the projector was mounted on the wall, तो इसमें ये unimportant है, James and I. Personal pronoun. Appropriate use of pronouns is key to maintaining an academic tone in writing. First person pronoun I, we should be used when referring to your own action and thoughts. Don't refer to yourself in third person. The researcher administered the test. वर्क आपका है तो आप ऐसे लिखेंगे, we administered the test, या फिर I administered the test. However, avoid editorial we, which involves using we to make a generalization about the world or about a group of people. We are social creatures. बेहतर ये होगा लिखना, humans are social creatures. जब आपको इसको जेनेरिक में जनरलाइज करना होता है तो वी नहीं लिखा जाता, बल्कि इसको इन जनरल लिया जाएगा, जैसे ह्यूमन्स आर,
अगर यहाँ पे रिसर्चर्स हैं तो रिसर्चर्स, टीचर्स हैं तो टीचर्स इन जनरल। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू शुड बी अवॉइडेड। सेकेंड पर्सन को अवॉइड किया जाता है entirely unless you are quoting someone else. If you need to make a generalization, use impersonal pronoun one. Instead are usually the better option. Rephrase. As a teacher, you should, you should be patient with your students. बल्कि बेहतर ये होगा लिखना, करेक्टिव वे ये है, एज अ टीचर वन शुड बी पेशेंट। ठीक है, इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाएगा विद वंस स्टूडेंट्स। टीचर्स शुड बी पेशेंट विद देयर स्टूडेंट्स। use the third person pronoun they to refer to an individual who uses they as their chosen pronoun. Also use they, not he or she, to refer the generic individual whose gender is unknown or irrelevant in the context. When a student agrees to participate, he or she is provided with necessary material. अब he or she की बजाय हम यहाँ they को यूज करेंगे, they, ठीक है, they. When a student agrees to participate, they are provided with the necessary materials. गौरतलब बात है कि अगर इवन सिंगल हैं यानी कि सिंगल स्टूडेंट है, उसके बावजूद यहाँ दे लगा रहे हैं क्योंकि वी डोंट नो अबाउट आइदर ही और शी. When students agree to participate, they are provided with the necessary materials. अब they यूज करते हैं बजाय हम यहाँ he और she यूज करें. Punctuation में besides following general punctuation rules, pay attention to these points when writing in APA style. You see, for example, E dot G dot is abbreviation for the Latin phrase exempli grantia, meaning for example. इसका मतलब है for example के तौर पर इसको लिखा जाता है. That is abbreviation for the Latin phrase id est, meaning that is. Always use periods after each letter in both acronyms. यानी I dot then E dot periods यूज करेंगे यहाँ. आज सेकेंड रूल ये है, a comma should be used after acronym like the following. इनके फौरन बाद कोमा यूज किया जाता है. डोंट यूज इटैलिक्स, इसको इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता. यूज लोअर केस लेटर्स व्हेन यूजिंग, दैट इज आर. फॉर एग्जांपल इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में लिखेंगे तो लोअर केस में. द ओनली exceptions to this is when abbreviation starts a sentence. जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो या फिर टाइटल हो तो फिर आप ये एक्सेप्शन है कि स्मॉल में नहीं लिखेंगे बल्कि उसको यूँ लिखा जाएगा. जैसे फर्ज करें ये हेडिंग है तो फॉर एग्जांपल आई कैपिटल होगा, इस तरह ई कैपिटल होगा. पंक्चुएशन है, फॉर्मेटिंग. हेडिंग्स के लिए आप इस तरह से यूज करें. ऑलवेज यूज comma after the Latin abbreviation. Okay. The Summer Olympics is composed of variety of sports. For example, ये देखिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा comma यूज किया जा रहा है. जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग एंड टेनिस. Similarly, use comma after an
introductory phrase even if it's only single word. For example, conversely, इंट्रोडक्टरी फ्रेज में आपने कोमा यूज करना है, जैसे देयरफॉर लिखते हैं हम, जैसे आप देयरफॉर लिखो तो फिर उसके बाद कोमा. ऑलवेज यूज सीरियल कोमा, which means placing a comma before the final item in the list of the three or more items. For example, grammar, comma, usage, comma. Even last है आप and यूज करते हो लेकिन इसके बावजूद यहाँ comma आएगा साथ. Use double quotation mark, comma, and place a comma or period following a quote inside the quotation mark. जब आप कोटेशन लिख रहे होते हैं डबल कोटेशन, तो डबल कोटेशन में या हम कोमा यूज कर रहे होंगे जो लास्ट जब इन्वर्टेड कोमा लिखते हैं, या फिर पीरियड लिखा जाएगा, पीरियड होगा, फिर आप उसको इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करते हो. Abbreviations and acronyms. An abbreviation is a shortened form of a word used in place of full word. जैसे कॉर्पोरेशन है, CORP, full stop, period होता है साथ. An acronym is a word formed from the first letters of each of the words in the phrase or name. For example, NASA or laser. NASA stands for National Aeronautic and Space Administration. Laser, light amplification by the simulated emission of radiation. जो पिन कोड होते हैं, PIN पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. किसी फ्रेज या किसी नेम के जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उसको एक्रोनिम कहते हैं. रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. नेटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. यूनिसेफ, the United Nations International Children's Emergency Fund. Proper use of abbreviations and acronyms is important since they help keep your writing concise, but can be confusing if used inconsistently or without proper explanation. Define an acronym when you first mention it. जब भी कोई आपने पहले इंट्रोड्यूस करना होगा या फर्स्ट टाइम जब मेंशन किया जाएगा, एंड यूज इट कंसिस्टेंटली आफ्टर दैट पीरियड, दैट पॉइंट, उस पॉइंट के बाद फिर आप उसको एक्रोनिम्स को यूज करते जाएं. यू डोंट नीड टू डिफाइन वेरी वेल acronyms like TV, DNA are abbreviations for standard units of measurements, for example minutes per minute. यानी जो वेल नोन है उनको आप फर्स्ट जब आप फर्स्ट मेंशन कर रहे हो तो उसको फुल उसका जो नेम है वो लिखना ज़रूरी नहीं होता, आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. इसी तरह एब्रीविएशन में जैसे मिनट है, ये वेल नोन है, इसलिए इसको डायरेक्ट ही आप यूज़ कर सकते हैं. रीडिफाइन एन एब्रीविएशन इन ईच फिगर एंड टेबल्स इन विच इट अपीयर्स. डायनामिक राइटिंग में जब फिगर कैप्शन या उसका टेबल का कैप्शन है तो उसमें आप रीडिफाइन करते हो. द पर्पस ऑफ redefining abbreviations in the table or figure is that if other authors reuse a work in a future paper, then the definitions of terms will be attached. Avoid using an acronym in your paper title. पेपर टाइटल में एक्रोनिम यूज नहीं करें, except in cases where the acronym is used more commonly than the full term. For example, DNA, HIV, वेल नोन और बहुत कॉमन हो तो उनका यूज कर सकते हो टाइटल में, अदरवाइज एक्रोनिम टाइटल में अवॉइड की जाती है. You can use acronyms in headings only if they are similarly common or have been defined in text before that heading. जो टेक्स्ट के अंदर हेडिंग्स आ रही होती हैं उनमें आप या तो बहुत कॉमनली यूज्ड
एक्रोनिम या एब्रिवेशंस है तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर इससे हेडिंग से पहले किसी टेक्स्ट में, पीछे टेक्स्ट में इनको डिफाइन किया जा चुका है तो आप यूज़ कर सकते हो। It's fine to begin a sentence with an acronym or abbreviation. However, never begin sentence with lowercase. जब एक्रोनिम स्टार्ट में आता है तो फिर उसको आप लोअर केस में नहीं लिखते। और स्टैंड अलोन सिंबल, यूज पीरियड्स इन टर्म्स US and UK only when they are used as adjectives. जब ये एडजेक्टिव्स के तौर पर आते हैं तो आप यहाँ पीरियड्स लगाएंगे U डॉट S डॉट, नॉट व्हेन दे आर यूज्ड एज नाउन। जब नाउन के तौर पर होंगे देन आप इसको US एंड UK फिर आप बगैर पीरियड के लिखते हैं। Do not use period in abbreviations of state, province and territory names. एब्रिवेशंस में अगर स्टेट है, कोई सूबा है, प्रोविंस है, टेरिटरी है, उनके नेम्स में पीरियड यूज नहीं किया जाता। जैसे NY न्यूयॉर्क है। US पोस्टल एब्रिवेशन, use the Latin abbreviation, for example that is and etc etc only in parentheses or within bullet points. Bullet point is APA consider them too formal for the main text. जब भी ये लेटिन एब्रिविएशंस आएंगी इनको आप विद इन द पैरेंथेसिस लिखना होता है एपीए स्टाइल में। हाइफन क्या होती है? व्हाट इज हाइफन? हाइफन is a punctuation mark that's used to join words or parts of words. It's not interchangeable with other types of dashes. Use hyphen in compound modifier. Compound modifier में इसको यूज करना है when the modifier comes before the words modifying. जिस वर्ड को आप मॉडिफाई कर रहे हैं अगर उससे पहले ये आता है कंपाउंड वर्ड देन हाइफन को यूज किया जाता है। Hyphen with compound modifies two word adjective before noun. First type, two word adjective before noun. A compound modifier is made up of two words that work together to function like one adjective. When you connect words with the hyphen, you make it clear to readers that the words work together as a unit meaning. Generally, you need the hyphen only if the two words are functioning together as an adjective before the noun they are describing. If the noun comes first, leave the hyphen out. जब noun बाद में आएगा तो hyphen यूज करना है, noun अगर स्टार्ट में आता है तो फिर hyphen यूज नहीं की जाती। लाइक देखें, एग्जांपल देखें, it's recommended you don't take down any load bearing walls. wall noun है, noun इस कंपाउंड वर्ड से के बाद में है इसलिए यहाँ हाइफन का यूज हुआ है। लोड बेयरिंग वाल, ऐसी वाल जो लोड उठा सकती है, लोड बेयरिंग, लोड को बेयर कर सकती है। दिस रॉक हार्ड केक, सख्त केक, रॉक हार्ड केक एडजेक्टिव है, एक कंपाउंड वर्ड के साथ है, यहाँ हाइफन लिखी जाएगी। केक जो नाउन है ये इस कंपाउंड वर्ड के बाद में है, ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। रॉक हार्ड केक is absolutely impossible to eat. We are looking for a dog friendly hotel. ये होटल जो है ये यहाँ नाउन है और इसके बाद में है। If noun comes first, leave the hyphen out.
लाइक वाल इज लोड बेयरिंग। अब यहाँ हाइफन यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये जो वाल है एक नाउन के तौर पर है और ये स्टार्ट में है, इससे पहले है। इट्स इम्पॉसिबल टू ईट दिस केक। अब केक जो है ये एज अ नाउन बिकॉज इट इज रॉक हार्ड। अब रॉक हार्ड जो है ये कंपाउंड वर्ड में हाइफन यूज नहीं की जाएगी। इज दिस होटल डॉग फ्रेंडली? अब डॉग फ्रेंडली में हाइफन इसलिए नहीं आया है कि होटल जो है ये स्टार्ट में है। When we combine a noun or an adjective, and when we combine a noun or adjective and present participle जिसमें ing होता है, ठीक है, वर्ड एंडिंग इन ing उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। When we combine a noun or adjective, जब नाउन या एडजेक्टिव को कंबाइन किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ मीनिंग दैट डिस्क्राइब्स another word, use hyphen to make that unit of meaning clear। जैसे देखें ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर्स, इसमें भी वही रूल लगता है कि जो नाउन है वो इसके बाद में आना चाहिए। सो ये लुकिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ आपके पास ये एडजेक्टिव है, ठीक है, या नाउन होना है या एडजेक्टिव होना है, तो यहाँ एडजेक्टिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव, इससे कंपाउंड वर्ड बन रहा है और इसमें हाइफन आएगी इसलिए कि इसका नाउन जो है वो इसके बाद में आ रहा है। सो ब्यूटीफुल लुकिंग जैसे गुड लुकिंग होता है। फास्ट एक्टिंग मेडिसिन कैन बी यूजफुल व्हेन वन हैज अ हेडेक। डोंट यूज हाइफन व्हेन मॉडिफायर कम्स आफ्टर द नाउन। मॉडिफायर जो है वो इसके बाद में आ रहा है, जैसे दिस मेडिसिन इज फास्ट एक्टिंग, ठीक है, इसमें हाइफन यूज नहीं करेंगे। Don't use hyphen when you are combining an adverb and a participle। adverb के साथ नहीं आती है hyphen। adverb याद ये wrong है ऐसे लिखना, heavily recorded, हाँ बल्कि बगैर हाइफन के लिखा जाएगा heavily recorded chocolate। This room was like a heavily decorated chocolate box। Hyphen in a compound expression with a noun and past participle। पास्ट पार्टिसिपल जैसे बेस्ड, जैसे पावर्ड, जैसे नो न्यू नॉन, थर्ड फॉर्म है वर्ब की और ये नॉन के साथ आ रहा है। ह्यूमैनिटी इज नॉन, विंड इज नॉन, वेल इज नॉन हियर एंड मीट इज नॉन। मीट फेड कैट्स, मीट फेड। अब ये नॉन जो है वो इस मॉडिफायर के बाद में आ रहा है मीट। इस तरह से जनरेटर्स इज नाउन, एजुकेशन इज नाउन हियर। कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, हाइफन यूज की जाएगी। विंड पावर जनरेटर, मीट फेड कैट, वेल नोन लोकल सिंगर, local singer is noun। Don't use hyphen when compound comes after the noun। सेम रूल है कि जो कंपाउंड है वो नाउन के बाद में आ रहा है। मतलब सिंगर, परफॉर्मिंग टुनाइट इज वेल नोन।
यहाँ वेल नोन जो है ये एक कंपाउंड वर्ड है, लेकिन इसमें हाइफन यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो इससे पहले आ रहा है. कंपाउंड कम्स आफ्टर द नाउन, राइट. ये नाउन के तौर पर सिंगर परफॉर्मर, सिंगर. Hyphenated compound words. Hyphenated compound words are ones obviously with a hyphen between the words. Over time, many hyphenated compounds become closed compounds. Teenagers became teenager, for instance. कुछ इतना टाइम के साथ साथ ये कंपाउंड वर्ड्स इतने वेल नोन हो जाते हैं, इतने कॉमन हो जाते हैं कि फिर हाइफन लेस हो जाते हैं. उनको क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है, और ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हैं, जैसे मदर इन लॉ, मास्टर एट आर्म, एडिटर इन चीफ, 10 years old, फैक्ट्री मेड, 12 पैक. क्लोज कंपाउंड जिसमें इतने कॉमन हो जाते हैं, वेल नोटबुक है जैसे, सुपरमैन, वेस्ट कोट, बुक स्टोर, फायरमैन. Hyphenated words tend to become closed compound. वक्त के साथ साथ ये इतने ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं कि सिंगल वर्ड विद नो हाइफन्स ओवर टाइम, लाइक ईमेल. स्टार्ट में आप इससे लिखते थे ईमेल, हाइफनेट किया जाता था. अब इतना कॉमन है कि उसको इकट्ठा लिखा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इज इंक्रीजिंगली कॉमन दीज वर्ड्स, book note, notebook, Superman, like open compound words. Open compounds are typically made up of two nouns that are used together to represent a single idea. Open means that there is a space between the two words and no hyphen. A good dictionary is the best place to check whether the compound is open or not. ओपन कंपाउंड्स को कहा जाएगा कि दो नॉर्म्स हैं और वो कंपाउंड, जैसे लिविंग रूम, इसमें हाइफन नहीं यूज की जाती. रियल एस्टेट, डिनर टेबल, दोनों नाउन है और कंपाउंड नाउन, इसमें हाइफन का इस्तेमाल नहीं किया जाता. कॉफी मग, हाइफन एंड नंबर, नंबर्स के साथ देखें, नंबर्स बिटवीन 21 and 99, 21 and 99, इनके बिटवीन हाइफन यूज की जाती है. Numbers between 21 and 99 should be hyphenated when they are spelled out, like 56. ये 56 है, 56 बटल. इस तरह से देखें, 19th, 99, 99 हाइफन, सिंगल वर्ड यूज होना है. 22 of these gizmos is cell. I got 122. Hyphen in compound adjective with numbers. When numbers are used as the first part of compound adjective, use a hyphen to connect them to the noun that follows them. The president of company gave a 10-minute speech. The first part of compound adjective, 10-minute speech, 10-minute speech, yeah. Compound adjective. He is
knowledgeable in 13th century politics. Thir 13th century is adjective here. So 13th century. The boy threw a rock at second story window. Second story window is adjective here. Second story window. However, hyphen is not required if the number is the second word in the compound adjective. अगर ये first है, first part है adjective का तो उसमें hyphen use करते हैं. अगर ये last second है तो इसको नहीं use किया जाता. He is a victim of type 2 diabetes. Type 2. ये एडजेक्टिव है लेकिन जो नंबर है वो सेकंड पार्ट है इसमें बेसमेंट 3 दिस एलिवेटर डजंट गो डाउन टू बेसमेंट 3 तो यहाँ हाइफन यूज नहीं की जाती हाइफन इन कंपाउंड एडजेक्टिव विद फ्रैक्शन व्हेन यूजिंग अ फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल half or quarter as part of compound adjectives. I half wanted to commit a felony. Half wanted. Okay. Compound adjective with fraction. जब adjective में अब fractions आ रही हैं साथ, like a $250,000. $250,000 is adjective here. Dollar is noun and its adjective is $250,000. You will need 1/3 of a pound. 1/3 of a pound. That's a half-baked idea. Half-baked idea. Fraction with the adjective for the noun idea here. Hyphen with prefixes x, self, all. Like use hyphen with the prefix x meaning formal. Like don't sit Adam next to Martha. She's his ex-wife. ठीक है एक्स ई एक्स के साथ हाइफन यूज किया जाएगा ऐसे एक्स मेयर से सेल्फ के साथ आता है सेल्फ सेटिस्फाइड हाइफन यूज की जा रही है सेल्फ सर्व और फुल सर्व हाइफन विथ हाई लो हाई ऑक्टेन जैसे वर्ड होता है लो फ्लाइंग एयरप्लेन when you using high or low as part of compound adjective use a hyphen when the compound comes before the noun is modifying low flying same rule है कि इसके बाद आपका noun आ रहा है high octane देखें high octane gasoline adjective बन रहा है ये इस तरह low income families high interest saving so ये एकेडमिक रूल्स थे हमारे पास हाइफन्स के और मुख्तलिफ हमने शुरू में 4 कंपोनेंट्स हमने देखे इसमें रेफरेंस के 4 पार्ट्स हैं इसमें ऑथर डेट यस ऑथर डेट राइटर सोर्स इनको स्टडी किया
से रेलिवेंट कुछ और चीज़ें देखी तो ये एकेडमिक राइटिंग में यूजफुल टॉपिक है। और उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा होगा। इसको केयरफुली पढ़ें और अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा।